Today we are going to do idioms. Today we are going to do idioms and we will be discussing different advanced idioms. So let's see some of the good idioms. Number one idiom which we will discuss is a fraction of. A fraction of. A fraction of means a small or a tiny part. Right. So what would be the sentence which we can make with a fraction of? His poetry is a fraction of his huge body of literary works. मीन्स उनका जो पोइट्री है उन्होंने लिटरेरी वर्क्स बहुत किए हैं और इस लिटरेरी वर्क्स में उन्होंने पोइट्री लिखे हैं जो कि एक सिंपल स्मॉल पार्ट है उनका बॉडी ऑफ लिटरेरी वर्क्स का. राइट. सो अ फ्रैक्शन ऑफ जो है वो इडियम मीन्स अ स्मॉल और टाइनी पार्ट. नंबर 2, all things considered. All things considered. All things considered means taken or taking everything into account. जब आप सारी चीजों को कंसिडर करते हैं और अकाउंट में लेते हैं. राइट. सो ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, द वैक्सीनेशन ड्राइव in India has been largely successful. The vaccination drive in India is largely successful. So here why are we using all things considered in this sentence? क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो इंडिया में हुआ है उनका इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है. इनिशियली वैक्सीन हमें ठीक से मिला नहीं है, सप्लाई डिमांड शॉर्टेज था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट सारे चीज़ों को बहुत लोगों ने वैक्सीन लेना नहीं चाहा. राइट. तो ये सारे चीज़ों को जब कंसिडर देखा जाए, राइट, फिर भी इंडिया में वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 70% के पास आसपास पहुंच चुका है. सो विच मीन्स, और सिंगल डोज उससे ज़्यादा भी हो चुका है. सो विच मीन्स दैट ऑल थिंग्स कंसिडर्ड द वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल. सारे चीज़ों को मद्देनजर नो वैक्सीनेशन ड्राइव हैज बीन सक्सेसफुल. राइट. नंबर 3 इज to be bound to. To be bound to means to be certain or destined to.
मतलब होने वाला है, उसी दिशा में जा रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉक मार्केट was bound to rise sharply due to the fall in number of कोविड केसेस. सो अभी जो कोविड केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो वहां पर हम बोल रहे हैं द स्टॉक मार्केट वाज बाउंड टू राइज, यानी वो होने वाला था, वो श्योर था कि स्टॉक मार्केट विल राइज बिकॉज देयर इज अ शार्प फॉल इन द कोविड केसेस. राइट. नेक्स्ट इज drive up the wall. Now ये सुन के शायद आपको ये लगे कि हम दीवार पे ड्राइव कैसे कर सकते हो, वॉल तो वर्टिकल होता है. राइट. सो उसमें फिर चाहे मोटर बाइक हो चाहे कार हो, जो भी हो, उसको हम चला के कैसे ऊपर ले सकते हैं. ड्राइव ऑफ द वॉल इज एन इडियम जिसका मतलब होता है टू annoy someone. टू annoy someone, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्से में लाना. राइट. योर एक्ट ऑफ मिस्चिफ, आपका बदमाशी, इज ड्राइविंग मी अप द वॉल. आपका बदमाशी मेरे को बहुत ही गुस्सा दिला रहा है. इज ड्राइविंग मी अप द वॉल. राइट. सो ड्राइव अप द वॉल इज एन इडियम जिसको आप याद रखिएगा. मीन्स टू अनॉय समवन. टू ब्रेक अ लेग, ये और भी मजेदार इडियम है. टू ब्रेक अ लेग, अगर कोई सोचता है कि टांग तोड़ देना, ये भी एक इडियम है. सो इट इज नॉट लाइक दैट. टू ब्रेक अ लेग मीन्स टू हैव गुड लक. देखिए, जो इडियम है, जो लिखा हुआ है वो, और इडियम का जो मीनिंग है, एक्चुअल इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो है, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट. टू ब्रेक अ लेग শুনলে মনে হয় পা ভেঙে দিচ্ছে, কিন্তু এর ঠিক উল্টোটা, টু হ্যাভ গুড লাক. ফর এক্সাম্পল, I think you will break a leg if you exam falls on the Shivratri day. Means you will have good luck because it's an auspicious day. वो एक अच्छा दिन है, वो एक मंगलमय दिन है. So I think you will break a leg if your exam falls on the Shivratri day. So fifth is break a leg. Sixth is easier said than done. Easier said than done. So this is a nice idiom which means difficult job. Right. Let's look at the question example. Achieving a good rank
in the civil services exam is easier said than done. So, this means that we know that civil services is a very tough examination. So, if we have to achieve a good rank in the civil services examination, it is easier said than done. बहुत लोग हमें बोल सकते हैं, अरे अरे वो सिविल सर्विसेज थोड़ा ठीक से प्रिपेयर कर लो, हो जाएगा, राइट, क्वेश्चंस उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, ये सब चीज़ें हमें बोल सकते हैं, राइट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ईजियर सेड देन डन. बोलना बहुत आसान है, करना काफ़ी मुश्किल होता है, राइट. सो दिस इज ईजियर सेड डन. सेवेंथ इज for the most part. For the most part means usually, in most cases. Usually in most cases. So example is, I find going to gym for the most part enjoyable. Right, for the most part enjoyable. So usually in most of the cases. डेफिनेटली जिम में जाने से कभी कभार बहुत मेहनत करना पड़ता है एंड उसमें आपका जो जिम ट्रेनर है वो बहुत प्रेशर करते हैं, राइट. सो बट ओवरऑल आप एनर्जी होता है जिम करने के बाद, अच्छा रिफ्रेशिंग लगता है. सो फॉर द मोस्ट पार्ट मेजॉरिटी ऑफ इट आई फाइंड इट एंजॉयबल, राइट. Disappointed. So in low spirits, right. So इसका opposite meaning sentence होगा, his failure to get the Olympic gold medal put him into low spirits or made him disappointed, made him sad because he expected, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलेगा. Just around the corner. অনেকে ভাবে এটা বোধহয় ঠিক কোণের দিকের কথাটা বলছে, लोग सोचते हैं कि ये जस्ट कोने के बारे में बता रहा है. नो, जस्ट अराउंड द कॉर्नर इज एन इडियम which means coming very soon. Coming very soon, right. What is it? Let's see. Harry's house is just round the corner. We will be there in a few minutes. We will be there in a few minutes. So just round the corner means coming very soon, very near, right. So coming very soon. Harry's house is just round the corner. We will be there in a few minutes.
Next is make a point. Right? It is, it means always do something particular. This is interesting. Let's see the sentence. Shaheli made it a point that she goes to the temple every morning. See, Shahili made it a point that she goes to the temple every morning. So, here she is doing something on a regular basis and something which is particular. So, Shahili का बहुत सारा काम रहता है. ওই কাজের মধ্যেও কিন্তু সাহেলি কি করছে না, she is making it a point that she goes to the temple. She is making it a point that she goes to the temple. So, always do something particular means made a point, right? To make a point. Always do something particular. Number 12th, so we have come to a dozen of idioms, right? To make ends meet. Or sometimes we also say to make the ends meet. बहुत लोग बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट. एंड्स दो ही होता है, राइट? एंड्स दो ही होता है, इसीलिए बोथ एंड्स यूज करना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. टू मेक एंड्स मीट, राइट? और टू मेक द एंड्स मीट. ओके, एंड्स दो ही होता है, एक चीज का, कोई चीज का एक शुरू एक अंत होता है, राइट? तो मेक बोथ, टू मेक एंड्स मीट. एग्जाम्पल क्या होगा? द पैंडेमिक has hit the earnings of millions very badly. They find it difficult to make ends meet. Nowadays, just enough to live on. To earn just enough to live on. बचने के लिए जितना जरूरी है उतना कमा लेना is to earn just enough to live on. That means to make ends meet. Next is 13. To miss a point. To miss a point or to miss the point. To miss the point means fail to understand the most important point. Fail to understand the most important point. For example,
For example, since the minister missed the point raised by the opposition, the latter created a pandemonium in the parliament. ये तो हर रोज आजकल होता है कि पार्लियामेंट में चिल्लाना, चीखना, कागज फेंकना, राइट, कागज फाड़ देना, बिल्स, एक्ट्स, ये सब बहुत सारे चीज होता है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. However, what I need to say is, since the minister missed the point, शायद opposition ने कोई point raise किया था जो कि वो लोग चाहते थे कि जिसके ऊपर डिबेट हो, तो मिनिस्टर ने उसको मिस कर दिया, raised by the opposition, और जो कि मिस कर दिया, opposition सोचा कि हमें कोई इस चीज़ के बारे में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जा रहा है, right? So they started creating a pandemonium. Pandemonium means trouble, shouting, right? Everything, in a disorderly manner, to create a disorderly situation, pandemonium in the parliament. So this is what it means by to miss the point. 14th is narrow minded. शायद आप लोग सुने होंगे ये idiom, more or less used pretty commonly, right? This means prejudiced, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রাইট? অনেকে ন্যারো মাইন্ডেড হয়, অনেকে রাইট কুসংস্কারগ্রস্ত হয়, তাদের ন্যারো মাইন্ডেড বলে, রাইট? হার প্যারেন্টস ন্যারো মাইন্ডেডনেস stopped her from being in the combat forces of the Indian Army. Her parents' narrow-mindedness stopped her from being in the combat forces of the Indian Army. তো যে মেয়েটার ব্যাপারে এখন বলছি, সেই মেয়েটা খুব আশা করেছিল, খুব স্বপ্ন দেখেছিল যে কম্ব্যাট ফোর্সেস জয়েন করবে। ইন্ডিয়ান আর্মি এখন মেয়েদেরও কম্ব্যাট ফোর্সে ঢোকাতে শুরু করেছে এবং বর্ডার্সে রাইট AK-47 গান ফান নিয়ে টেররিজমকে স্টপ করবে অল দিস থিং, রাইট? সেই যে জিনিসটা, সেটা হলো না, কারণ বাবা মা অ্যালাউ করলো না, নো অবজেকশন লেটারে সই করলো না, বিকজ দে আর ন্যারো মাইন্ডেড, দে আর প্রেজুডিস, দে থিঙ্ক দ্যাট মেয়ে যাবে, ফ্রন্টে কাজ করবে, সেখানে ম্যাক্সিমাম ছেলেরা আছে, সো হোয়াট মাইট হ্যাপেন অ্যান্ড অল দিস থিং। তো সেই জন্যে তারা অ্যালাউ করলো না এবং ন্যারো মাইন্ডেডনেসের পরিচয় দিল। 15 নম্বর হচ্ছে অন হ্যান্ড, माने किंतु हाथेर ओपर नय, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ के ऊपर, राइट? देयर इज अ फ्लाई ऑन माई हैंड, एक मक्खी बैठा हुआ है, राइट? नॉट लाइक दैट. ऑन हैंड इडियम मीन्स प्रेजेंट और available, present or available. Let's see example কি আছে। My friend
Ashish is on hand because face any difficulty, he is at my door. Ashish is on hand because whenever I face any difficulty, he is at my door. Means कभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होता है, कभी भी मेरे को कोई डिफिकल्टी चैलेंज होता है, राइट, कुछ चीज़ संभालने में मुश्किल होता है, आशीष को बुलाओ तो आशीष तुरंत वो अवेलेबल होता है, राइट. सो ही इज ऑन हैंड, आशीष इज ऑन हैंड. Next is on the face of it. Wonderful idiom which means apparently. Right? Or without the knowledge of relevant facts. Without the knowledge of relevant facts. Right? Example, on the face of it, the proposal seems to be attractive. कोई कंपनी ने आपको प्रपोजल भेजा है या कोई इंसान ने आपको प्रपोजल भेजा है, आप उसको जस्ट एक बार देखें और उसको देखने के बाद आपको लगा कि वो प्रपोजल सही है, राइट. सो ऑन द फेस ऑफ इट द प्रपोजल सीम्स टू बी अट्रैक्टिव. अभी तक आपने यू हैव नॉट गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट और आप अभी उसको ध्यान से समझे नहीं है, बट ऑन द फेस ऑफ इट आपको लग रहा है कि वो प्रपोजल इज अट्रैक्टिव, आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, राइट. 17 is on the verge of. On the verge of. This means very near to doing something or experiencing something. Very near to doing or experiencing something, right? Example, she was on the verge of tears when she was rejected in the interview. বারোটা 15 আমার একটু লেট হয়েছে, আমার একটু লেট হয়েছে, আমি একটু কমিয়ে দিয়ে পড়ব. So on the verge of it, she was on the verge of tears when she was rejected in the interview. When she was rejected in the
into view. Let's look at a positive example. Rakesh was on the verge of winning the match when I left the stadium. When I left the stadium. Rakesh was on the verge of winning the match when I left the stadium. So this is a positive example. On the verge of means almost there. So almost there. On the verge of means almost there, very near to winning the match. Right. Part and parcel. दिस इडियम, इसका मीनिंग होता है इंटेग्रल कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट. और वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड indispensable. Indispensable, right. Uncertainty has been a part and parcel of the lives of every film star in Mumbai. Uncertainty has been a part and parcel of the lives of every film star in Mumbai. क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि ये जो मूवी इंडस्ट्री है, ये मूवी इंडस्ट्री इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. इस इंडस्ट्री में कभी आपका मूवी सुपर डुपर हिट हो सकता है तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे, कभी आपका मूवी बिल्कुल फ्लॉप हो जा सकता है तो उसमें बहुत लोगों का पैसा डूब भी जाता है. सो इट इज़ वेरी अनसर्टन. इट इज़ वेरी अनसर्टन. सो अनसर्टनिटी हैज़ बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइव्स ऑफ एवरी फिल्म स्टार इन मुंबई, जिसको लेके वो जीते हैं और सफल भी होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. 20. To pose a question means to raise a question. This is an easy idiom. To pose a question means to raise a question, right? For example, to pose a question on policies framed by the government is an essential part of democracy. So that's the reason why a parliament is there. इसीलिए असेंबलीज होते हैं, राइट, जहाँ पर हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाया है हेल्थ केयर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई सवाल जो पूछना है, राइट, ऑपोजिशन पूछता है, you know, the common citizens they ask through different media, right, newspaper letters to the editor लिखते हैं. So it's an essential part. डेमोक्रेसी में हमें डिबेट डिस्कशन ही करना है और वो डिबेट डिस्कशन डिफरेंट लेवल्स पे होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ बनाया है तो उसका सवाल जवाब होके ही उसको इम्प्लीमेंट होना सही होता है इन अ डेमोक्रेसी. 21 is a very nice idiom.
right? Roller coaster of emotions, और इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, रोलर कोस्टर राइड, रोलर कोस्टर राइड। ओके, अभी देखिए रोलर कोस्टर क्या होता है। आप जब कोई अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे, राइट, निको पार्क जैसा, उसमें इस टाइप का एक रहता है, राइट, और उसमें राइट लोग यहाँ पर चढ़ते हैं, राइट, यहाँ पर एक मशीन ड्रिवन व्हीकल होता है, उसमें लोग बैठ के ऐसे जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, ऐसा करके, एंड दे एंजॉय एंड हैव फन। तो रोलर कोस्टर इस टाइप का एक चीज को बोलता है, यानी उतार चढ़ाव, ऊपरे उठा नीचे नामा। तो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस বা রোলার কোস্টার রাইড, রাইট, এর মানে দাঁড়াচ্ছে কি? এর মানে দাঁড়াচ্ছে ফুল অফ হাইজ অ্যান্ড লোজ, আপ ডাউন, ফুল অফ হাইজ অ্যান্ড লোজ। ফর এক্সাম্পল, her life was her life has been that of roller coaster of emotions, and this has made her a wise person, and this has made her a wise person. So she has gone through a roller coaster of emotion or roller coaster ride, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव उनका हुआ है, और ये उतार चढ़ाव होने के वजह से उनका क्या हुआ है, she has become a very wise person, right? उनको एक विजडम आ चुका है, right? (22) is short and sharp. Short and sharp means quick and concise. Quick and concise. The short and sharp reply of the minister shut up the opposition voice immediately. The short and sharp reply of the opposition voice of the minister shut up the opposition voice immediately. Opposition बहुत हल्ला कर रहे थे, खूब চেঁচামেচি করছিল, কিন্তু মিনিস্টার একটা ছোট্ট এবং খুব শার্প রিপ্লাই দিলেন তাদের ডাউট এবং কোয়েশ্চেন। তাতে পরে কি অপোজিশন একদম ঝটকা খেয়ে গিয়ে একদম চুপ হয়ে গেল। সো দ্যাট ইজ ওয়্যার উই ইউজ দ্য ইডিয়াম শর্ট অ্যান্ড শার্প। নেক্সট ইডিয়ামটা একটা খুব মজাদার ইডিয়াম, সিট অন দ্য ফেন্স। সিট অন দ্য ফেন্স, রাইট। তো ফেন্সটা কি জিনিস? ফেন্সটা হচ্ছে যেটা আমরা বাড়ির আশেপাশে দিই, রাইট। সো দিস ইজ ফেন্সিং, যাতে গরু ঘোড়া না ঢুকে পড়ে,
right? গরু বাছুর বা ছাগল না ঢুকে পড়ে। So if someone is sitting on the fence, it's impossible, right? তাহলে he is divided between this side and this side, দুদিক। He is divided between this side and this side, দুদিক, right? So sit on the fence, the idiom means to avoid making a decision or choice। माने ना আমি এদিকে না আমি ওদিকে, मैं तो यहाँ का भी नहीं हूँ वहाँ का भी नहीं हूँ, मैं चुपचाप बीच में बैठा हूँ, sitting on the fence। The good example is when it comes to eliminate terrorism, Pakistan has the habit of sitting on the fence, has the habit of sitting on the fence means Pakistan কোনো concrete decision নেয় না। To steal the show, এটার সাথে কোনো চুরি করার কিন্তু সম্পর্ক নেই, right? To steal the show means attract the highest attention, right? Attract the highest attention। Example, the Prime Minister's speech in the United Nations stole the show and media across the world was praising about it। The Prime Minister's speech in the United Nations stole the show, মানে এত সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছে যে it attracted the highest attention, আর সেই জন্য media across the world was praising about it। So media across the world was praising about it। This is steal the show। 25, to take great pleasure in means really enjoy doing something। When you really enjoy doing something, it can be positive or negative। I'll give you both the examples, right? Really enjoy doing something, let's take two examples, right? Number one, the music lover took great pleasure
hearing to Lata Mangeshkar songs. লতা মঙ্গেশকরের গান শুনে উনি খুব আনন্দ পেতেন, right? This is the positive example. This is a positive example. The negative example is the headmaster took great pleasure in punishing students by making them stand on the bench. By making them stand on the bench. So the headmaster took great pleasure by making them stand on the bench. This is a negative example. So we are halfway through with the idiom chapter, and this is a very exciting chapter, so we can continue this chapter in the next session. And that's all for today. So it was wonderful interacting with you, right, in this Ssc-Cgl class.